Hi everyone, I have someone here with me and I would like him to introduce himself to you all. So, hello. Hi, I'm Dr. Anshuman Pancholi. I'm a general surgeon and I've done my MBBS as well as MS from MGM Medical College Indore. And since then I've been into practice. Oh, that's lovely. So, today we're doing something really exciting. Today is World Heart Day and we have Dr. Pancholi here telling us about how the heart works, not in the romantic angle of it, but the scientific angle of it, and how you can be safe and how you can prevent anything that would cause the heart any sort of problems. So I hope we're ready for that. Yeah. तो अब हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करने वाले हैं. कुछ वो क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको भी सुन के ये लगेगा कि अरे हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था. सो डॉक्टर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आज की डेट में इंडिया में कितने लोग हैं जो हार्ट प्रॉब्लम्स से गुजर रहे हैं या उनको एक पोटेंशियल एक हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है आज की डेट में? तो तकरीबन देखा जाए तो 5.5 करोड़ के आसपास ये एक फिगर आता है जिसमें क्योंकि स्टैट्स कोट करते हैं कि तकरीबन इतनी लोग हैं जिनको कार्डियक डिजीज़ होंगे, बट ये फिगर जो है अपने आप में एक अंडरस्टेटमेंट है. बिकॉज जनरली ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंचते नहीं है क्योंकि कार्डियक डेथ्स जो होती हैं वो सडन डेथ्स होती हैं मेजर डेथ्स में. तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इनफैक्ट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो कि जिनके बारे में ज़्यादा बात होती है उनके कंपैरिजन में ये एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जिसके तरफ ध्यान जाना ज़रूरी है. ओके. आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप या एज सेक्शन है सोसाइटी का या कोई पर्टिकुलर जेंडर है एक सोसाइटी का जिनमें ये इश्यूज हम ज़्यादा देखते हैं कि जैसे बोला जाता है कि औरतों में हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है, एक बहुत कॉमन मिथ है. तो ऐसा हो सकता है क्या कि मेल में ज़्यादा है, औरत में कम है, या कोई एज ग्रुप में ज़्यादा कम है? ये पहले माना जाता था कि फीमेल्स जो हैं उनके अंदर प्रोपेंसिटी कम होती थी कार्डियक डिजीज़ की, बट ओवर द टाइम जिस हिसाब से रिसर्च प्रोग्रेस हुई है वी हैव रियलाइज्ड स्पेशली इंडियन सिनेरियोज में ऐसा हुआ है बिकॉज पहले स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो मेल पेशेंट्स में ज़्यादा होते थे कंपैरेटिवली, बट फीमेल्स में अब देखा जाए तो फीमेल्स में भी वो रेट बढ़ने लगी है बिकॉज ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है फीमेल्स में ज़्यादा प्रेवलेंट होने लगा है बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है फीमेल पेशेंट्स में. तो येस, नाउ द ट्रेंड इज़ नो मोर इन फेवर ऑफ लाइक मेल्स में ज़्यादा होता है या फीमेल्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं है. और जहाँ तक particular figures में हम आते हैं तो what we have realized over time is that 50% of the heart attacks are occurring in people who are under 50 years of age, and more alarming is that 25% of them are occurring in people who are under 40 years of age. So this is extremely alarming because all these figures are like ये एक decade earlier shift has compared to the Western population. Of course. तो कोई पर्टिकुलर रीज़न हो सकता है क्या कि आजकल लोगों में ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? मे बी हमारा डाइट या ऑफ कोर्स स्ट्रेस प्लेज अ वाइटल रोल जिस पे हम बाद में आ सकते हैं, बट डाइट जैसे लोग बोलते हैं कि खाना ठीक से नहीं खा रहे इसलिए तबीयत खराब रहती है. तो डज डाइट प्ले अ रोल इन आवर हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस? सो हार्ट डिजीजेज पर से कोई एक सिंगल फैक्टर कंट्रोल नहीं करता. इट्स यूजुअली अ मल्टी फैक्टोरियल काइंड ऑफ कॉजेशन. इसमें डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है बिल्कुल, और कन्वेंशनल वे से जिस तरह से डाइट प्रपोज की जाती है कि we are sticking to a particular kind of saturated or trans fat which is causing, that is all fine. What we need to understand is that equally important is the timing of your diet. Like what we have slowly shifted towards this तरह society progress हो गई and we are living into a more kind of a competitive environment. The timing of the diet has been hit the most. We are suffering from what lunch, when we used to have a lunch at maybe 1 o'clock is being shifted to like 3 or 4 in the evening. The dinners have shifted to 12 or 1 in the night. Absolutely. So this is a very odd time to consume a diet. So rather than focusing more on what should we eat, what we should not eat, we need to get basic things, start from the very basics, right? You know, if you're having a breakfast should be maybe 7 or 8 in the morning, and lunch should be maybe around 1 o'clock, and the dinner should be around maybe at 7 or 7:30. तो डॉक्टर, जैसे आपने अभी जस्ट हमें बताया कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल या खाना टाइम पे ना खाने से हमको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पर क्या कोई परसेंटेज है कि हम इससे बच सकते हैं? या बिल्कुल, और इनफैक्ट यही एक एरिया है जो विच इज़ गिविंग अस अ ब्राइट होप बिकॉज अबाउट 80% ऑफ दीज कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होते हैं ये प्रिवेंटेबल होते हैं. और ये फिगर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट एक स्कोप ऑफ इंटरवेंशन है कि अगर हम हेल्थ स्टाइल और लाइफ स्टाइल में इंटरवीन करते हैं तो हम इनसे बचा जा सकता है बेसिकली.
Okay, great. So what is something about stress? How is that a major problem in cardiovascular disease area? And also उससे कोई बचा जा सकता है? कोई tips हैं आपके पास कि हम stress को भी calm कर सकते हैं या we can be at a better place when it comes to stress? This is a very good question because अभी जिस हिसाब से लिटरेचर इवॉल्व हुआ है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को लेके, कन्वेंशनली हम हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल इन द फॉर्म ऑफ डाइट्स की बात करते हैं, बट जो एक फैक्टर है जो सबसे कम डिस्कस होता है वो है स्ट्रेस. एंड दिस इज़ द मेन फैक्टर विच इज़ कॉजिंग एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़. सो स्ट्रेस को आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ गुड फॉर अ पर्टिकुलर सिनेरियो. जैसे स्ट्रेस इवॉल्व हुआ कि we used to have a hunter-gatherer kind of lifestyle earlier when we were evolving as human beings. Stone Age. Yeah, Stone Age time. So stress would be something like if a wild animal is approaching you, आपके आ गए, आपको एकदम से stress हुआ. It was a fight and a flight response, fear, fight, flight. So that was good for a particular moment of action that was needed. But now what has happened in our current lifestyle is that we have become habitual of stress. Right. So what stress does basically is कि stress बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करता है. अब वो हार्मोन क्या करता है, उस हार्मोन के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं. उस हार्मोन की वजह से ब्लड में शुगर के लेवल्स बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ते हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है उस हार्मोन का. तो ओवर द टाइम वो इकट्ठा होते 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 धीरे 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 इट इज़ लाइक अ पॉइजन टू योर बॉडी. सो बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्ट्रेस अगर आप रोज लेते हैं तो आपने अपने आप को एक पॉइजन ड्रिप से कनेक्ट किया हुआ है एंड यू आर कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग दैट पॉइजन विच इज नॉट नीडेड. इट वॉज मेंट टू हेल्प यू, but now you have turned it against yourself. So basically the phrase that you turn your body against yourself holds valid when you talk about stress. एक simple सी चीज़ जो हर किसी के लाइफ में स्ट्रेस कम कर सकती है वो है कि improve your sleep. This is the first and the foremost thing to do. Now what has happened is with the use of social media and all of that, it has all crept into your sleeping time. Yes. So usually we all are going off to sleep, having a phone in our hand. We tend to take our share of entertainment, and while we're doing it, when we tend to fall asleep like that, which is a very wrong way to fall asleep. Of Because course. when you're falling asleep, you want yourself to be calm and relaxed and detached from all sorts of any information which is coming into your system needs to stop. So that is called as what we know as sleep hygiene. So this is something which is lacking in the current generation. Everybody, not just you and me, it's going wrong. Everybody is getting it wrong. Yeah. So sleep hygiene is one thing which we need to improve a big time. उसमें बहुत ज़रूरत है कि उस पर काम किया जाए. Especially हमारे बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि I agree. हाँ कि sleep hygiene एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना पड़ता है over the time. Now how would we do that is like suppose अगर आपका सोने का टाइम रात को 1 बजे है या 2 बजे आपका स्लीपिंग टाइम है, दैट्स अ रॉन्ग टाइम टू स्लीप बिकॉज आपकी बॉडी का एक सर्केडियन रिदम होता है ना. व्हाट इज अ सर्केडियन रिदम? योर बॉडी टेक्स क्यूज फ्रॉम आउटसाइड. आपको एक्सटर्नल क्यूज मिलते हैं विच आर यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो जैसे ही लाइट सोर्स कम होता है, अंधेरा छाने लगता है, द बॉडी टेक्स इट एज अ क्यू टू स्टार्ट रेस्टिंग. सो eventually by 10 or 11 o'clock you should go to bed and try getting up at the first stroke of light when it is like ideally हमारे पुराने ज़माने में भी ये बहुत बात बोली जाती थी कि 4 या 5 बजे का टाइम होता था जब आपको सुबह उठना होता था. Now I understand that कि the work stress has increased so much that it is sometimes not possible to sleep at 10 or 11. People are working shifts, maybe in the night shifts that's happening. But all said and done that also, we need to set apart at least 6 to 7 hours of sleep time when we are not disturbed by our work is not spilling over into our sleep. Right. So that is what we need to ensure. That is the basic step of reducing stress levels. Now, second step would be time management, which is like very crucial after sleep. How would we actually inculcate a good time management routine would be like, this is something which is lacking in the current scenarios of schooling setup as well. We don't teach how a time should be actually managed. Like we tell them, कि इतने time में complete करना है, इतने time में complete करना है. We don't have an hourly division of work, because of which what happens is we are often not able to complete a task which should have been completed in a particular duration of time. Right. And that adds to your stress. Immediately वो stress. So the fatigue. Yeah, the fatigue sets in. We set unrealistic goals for ourselves. Like Correct. अगर कोई काम 10 घंटे लेगा तो वो 10 घंटे लेगा. आपके सोचने से वो काम 6 घंटे में नहीं हो सकता. वो 10 घंटे लेगा. आप अपने आप को 11 घंटे दीजिए. Give yourself 11 hours. Be focused. Right.
but don't set unrealistic guidelines, Right. because that will eventually put more stress into you and you will end up getting stressed for no reason. Or दूसरा important, which is a very famous kind of a phrase, is that if you seed pleasure into your work, your pleasure will be rooted by work. So that is very important to understand that आपका जो काम है वो आप फोकस्ड रह के करिए. उस ड्यूरेशन में अगर आपके पास 6 घंटे वर्क आवर्स हैं तो आप फोकस्ड रह के काम करिए. Keep aside all the distractions and pleasures during that time. So eventually you not only get the work done, there'll be a lesser amount of stress put onto you to do the work which has not been completed, because your tasks will get completed accordingly. Correct. And you'll be able to give yourself that little leisure time which is needed for you to relax. Yeah. So unwinding, what we call as humko relaxation time. So everybody should have this, I say, about 30 to 40 minutes of time, which should be called as like me time or whatever you want to call it. So whatever little hobby you have, you may like to paint, you might like to read, maybe a fiction novel, you might like to listen to songs, whatever it is. Give yourself that half an hour or maybe 20 minutes in a day. That is a very, very important thing to do. Trust me, that changes a lot of things around you, because you tend to detach from what you're doing and you tend to enjoy that duration of time, whatever it is, maybe 15 minutes as well. So these are very small things. Then you come to things like which are conventionally, it's available wisdom, it's an open source wisdom. You do meditation, you do yoga, all these things are there. But if in the hindsight there is a continuous stress which is running as an undercurrent, all these things will not help you. Correct. So you need to understand that sleep, time management are the first priorities, should be considered that way. Right. Rather than shifting directly to, if you're stressed out, you don't have time, suddenly you think 5 minutes of meditation is going to help you. That is probably unrealistic. Not the, yeah. Correct. That will not work. Right. How much does smoking and alcohol cause a problem in heart problems? And also, is there any truth to it कि हमको smoking या cigarette से stress release होता है या drink करने से stress कम हो पाता है? What is your take on it? Cause okay, so basically the person who does it obviously feels कि stress कम होता है, so that is a different way of looking at it. But yeah, smoking and alcohol are an absolute no-no, especially considering the heart health. More specifically smoking, because smoking and tobacco is something which is extremely detrimental to not just the heart, but the entire body. And the changes also have been documented. There's a lot of research which has happened on smoking. So as soon as you stop smoking, over a period of an year, you reduce about 20-25% chances of getting a heart attack are reduced right away. So yes, smoking an absolutely no-no. Alcohol also is an absolute no-no, but a moderate consumption once in a while as a social drinker can be justified, but not necessary, not a mandation. But yeah, once in a while it's okay. Okay. The thing is, doctor, कोई warning signs होते हैं क्या कि अगर हमको ये हो रहा है या इस रीज़न से हमको हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या हम कैसे बच सकते हैं? खुद का एक हेल्थ चेकअप अपने साथ हम कैसे कर सकते हैं कि जिस रीज़न से हम वो जो डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, उसको प्रोलॉन्ग कर सकें या बच सके, या वो एक साइन आ जाए तो हम को पता चले अच्छा हमें अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, अब हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, समथिंग लाइक दैट. आर देयर एनी वार्निंग साइंस? बिल्कुल. सो शुरुआत करते हैं सबसे ऐसे साइंस जिनके लिए आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए. सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइन होता है, वो होता है चेस्ट पेन. नाउ चेस्ट पेन से क्या मतलब है कि आपको बहुत ही या तो बैठे बैठे या फिर बहुत माइनर एक्सरसाइज के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको चेस्ट में से स्क्वीजिंग सा सेंसेशन होगा. इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अ पिन पॉइंटेड पेन. यू विल फील एज इफ द एंटायर चेस्ट अराउंड इज बीइंग स्क्वीज्ड, एंड वो पेन या तो आपके आर्म्स में रेडिएट होगा या आपके नेक में रेडिएट होगा या आपके जॉ में भी रेडिएट हो सकता है कभी कभी. सो इट्स अ डेंजरस काइंड ऑफ अ पेन दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट. यू नीड टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर. एंड एक ECG उसी पॉइंट पे अगर कंडक्ट हो जाता है जब ये चेस्ट पेन ऑन गोइंग है, तो दैट इज प्रीटी मच डायग्नोस्टिक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. व्हाई? बिकॉज दिस पेन विच इज हैपनिंग it's called angina, and this is literally translated as a cry of the dying muscle of the heart. So you need to be very careful when such pain presents to you. Next would be something what we call as dyspnea, which is more particularly a symptom of heart failure. अब हार्ट फेलियर एक ग्रेडेशन टर्म है जिसमें कि सिवियर भी हो सकता है, माइल्ड हार्ट फेलियर भी हो सकता है.
Now what exactly we mean by dyspnea is that आपको सांस लेने में तकलीफ होती है. आपको जो नॉर्मली आप जैसे यू वर क्लाइंबिंग अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आप स्टेयर्स चढ़ रहे थे जो आप नॉर्मली 10 स्टेयर चढ़ने पे नहीं थकते थे. बाय द टाइम यू आर ऑन द 4th स्टेयर यू विल फील एज इफ यू आर ब्रीदिंग वेरी हैवी. सो इट इज डिफिकल्टी ऑफ ब्रेथ और ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. So this is another sign of it. Then there are other signs like for example, if you have a history of heart disease or if you have a valvular heart disease, valvular heart disease family में चला आ रहा है, या फिर आपकी heart valves में कुछ problem है. Correct. So what would that do is that is pretty much it will have dyspnea as well, but आपको हल्की हल्की आपको सूजन महसूस होगी towards the extremities, what we call as edema. Okay. तो वो भी एक manifestation sign होता है heart illnesses का. Right. So these are very common signs. Another sign which is generally missed by most of the people is like you feel an abnormal tingling sensation. Now what happens, what exactly do I mean by that is, suppose you go out for a morning run. After a very long time, like 4-5 kilometers you have run, and everybody tends to get some sort of a tingling or heaviness. But this is not the kind of tingling that I'm talking about. Like you go out for a run, maybe around after 400-500 meters, you feel as if there's an abnormal tingling sensation in the hand. You feel extraordinary numbness. Now this can be one of the early signs of a heart condition, and you do need to get it evaluated, especially if you have a history of heart disease, or if you are a hypertensive male, or you have got some intervention done already for your heart disease, like you've got a stent in situ, or if you have got a bypass grafting done. So if these symptoms are manifesting, you do need to consult a doctor. Okay. Thank you so much for this insightful interview, doctor. Just जाते maybe हमारे viewers के लिए अगर आप कुछ एक टिप दे सकते हैं कि हम अपने हार्ट को कैसे हेल्दी रखें, and how can we lead a longer, a healthier life. Just one tip or something that is the most important. So अभी तक का जितना डिस्कशन हुआ है उसमें और करंट सिनेरियोस को देखते हुए the only tip would be, start small but start. That is the most important thing. That's a great line. Don't really think of very dynamic changes in a very short amount of time, because that's not possible. Absolutely. बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स लीजिए, अपने डाइट का टाइमिंग इम्प्रूव करिए, स्लीप इम्प्रूव करिए, whatever is happening, time मैनेज करिए. Just be focused around your work, whatever you are doing. The repercussions or the results of the work will happen when they have to happen. Try to lead your life in a less stressed way, in the sense that your actions will later on manifest into results, but you need to act right now, and later on expect the results to happen. And early on. Yes, early on. And this is again a very important point that you pointed out. Like a very simple action that can initiate a very good healthy lifestyle is like, हम बच्चों को बचपन में क्या सिखाते हैं कि सुबह उठते हैं ब्रश करना चाहिए, रात को सोते हैं ब्रश करना चाहिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड हैबिट. बट इन इंडियन पर्सपेक्टिव इफ वी लुक एट, पेरेंट्स जनरली एक एक्सरसाइज की हैबिट इनकलकेट नहीं करवा पाते. पढ़ना है एंड दिस इज व्हाट गोज ऑन. यू नीड टू बिकम समथिंग, यू नीड टू अचीव समथिंग इन लाइफ. बेसिक जो एक पैरामीटर है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल इज गोइंग टू इनेबल यू टू अचीव व्हाटएवर यू वांट इन योर लाइफ टाइम. सो आप अगर प्रायोरिटाइजेशन सेट करें, इफ यू आस्क मी if how do I prioritize my child's life, number one, ensure he gets an adequate sleep. Now sleep has been talked about in various ways over the years कि उसकी negative aspect वो लोग बोलते हैं ज़्यादा सोता है उस वजह से ज़्यादा. So sleep is essential. That heals you. It's an essential part to remove the toxins of the body. Sleep well, sleep properly. First priority. Second priority, what you need to get right is time management. बच्चों को सिखाओ आपकी कितने टाइम में आपको काम करना है, एक schedule बनाओ. In fact, we need to set schedules for our diet as well. Like we plan everything in our life, we plan vacations, we plan work to be done tomorrow, we plan our meetings. We forget to plan the basic important thing, that is our diet. We don't plan our diet कि कल क्या बनेगा, शाम को क्या खाएंगे, so that we can incorporate healthy components into our diet. Correct. When we do that, in the ancient time what used to happen, used to have mothers, our grandmothers used to do that. एक दिन पहले डिस्कशन होता था कि कल दिन में क्या बनेगा, छोले बनेंगे, राजमा बनेगा. So they used to plan everything out. Now all of that is slowly dissolving away. Right. We just 5 minutes before we want to have a lunch, something we decide कि okay fine, आज नहीं mood है, you order something from outside. Processed food has become a part and parcel of our daily lifestyle. So that has to be slowly reduced upon. And slowly these small little changes will bring about the kind of change that we want, because information is broadly available, but the change is not coming. Why it's not coming? Because we're not working on the very little aspects that need to be worked upon. Correct. Yeah, so these little things, and I feel that should bring the change that we are looking for. That's lovely. Yeah. Thank you so much, doctor. Yeah. This was
very insightful even for me, for a layman. मेरे लिए भी ये एक बहुत ही insightful discussion रहा है. Of course, I will take away so many points from this, and I'm sure our viewers would also take away a lot of points. And thank you once again. For more content like this, please like, follow, and subscribe to Truemeds.